गाइस। आज हम ये वाला प्लैटर क्रंच करने वाले हैं जिसमें एक कुल्हड़ है एंड नकुमत के थोड़े से चंक्स हैं, चांद तारा स्लेट पेंसिल का बॉक्स है पूरा एंड थोड़े से स्लेट आइटम्स भी हैं और एक पंजाब की मिट्टी। सो लेट्स स्टार्ट। फुल रोस्टेड nakumatt। ब्लैक स्लेट आइटम। टू अर्दी, बहुत अर्दी। उतनी अर्दी नहीं है, थोड़ी सी ग्रिटी। फिर एक थिक बार।
dry kulhad. Chantara slate pencils.
कुकी भी खाने वाली हूँ जो मैंने खुद बनाया था। सो लेट्स स्टार्ट। Slate pencil. So that's all for today's guys. Do comment कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी एंड इसका रिव्यू देती हूँ। पहली बार जो भी मैंने क्ले आइटम्स लिए थे वो बहुत अच्छे थे। फुल रोस्टेड नकुमत जो बड़ा वाला चंक था वो बहुत ही बिटर था, बट ये वाला जो है मैं भूल गई कि मैंने कौन से सेलर से लिया था, पर इतना अच्छा नॉन रोस्टेड था वो चंक, इतना टेस्टी। जब मैंने इसके साथ स्लेट पेंसिल्स के साथ खाए थे बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत ही, इतना अर्दीनेस, इतना यम्मी, इतना क्रीमी, इतना अच्छा लग रहा था, स्मोकी फ्लेवर वाला, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। एंड पंजाब की मिट्टी भी बहुत टेस्टी थी। कुल्हड़ की क्या ही बात करूँ, इतना सॉफ्ट कुल्हड़ भी बहुत यम्मी था, बहुत ही अर्दी, बहुत ही क्रीमी और इतना थिन, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत यम्मी था। एंड उसका जो लास्ट वाला बॉटम वाला पार्ट था जो थिक था वो बहुत क्रंची था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आई एम सो हैप्पी विद दिस प्लैटर। डू कमेंट कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा सो आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। चांद तारा की क्या ही तारीफ़ करूँ, बहुत ही टेस्टी होती है ये। ऊपर से इतनी मोटी मोटी पेंसिल्स हैं, ये मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने क्रंच कर लिया था, बट गाइस ये स्लेट पेंसिल बहुत अच्छी है, बहुत यम्मी है, बहुत ही अच्छी है। एंड जो ब्लैक कलर का स्लेट आइटम जो था वो क्रंची था बट अर्दी नहीं था गाइस। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, बट बाकी ओवरऑल ऑल माई टुडेज प्लेटर इज़ वेरी यम्मी। आई एम सो हैप्पी। बाय बाय।